हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी मतलब इधर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। हमारा पिछला क्वेश्चन में हम जो आइडेंटिटी यूज़ किए थे, ए प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ कर कर हम लोग इनका वैल्यूज़ निकालना होगा। 64 स्क्वेयर, 105 स्क्वेयर एंड 205 स्क्वेयर का वैल्यूज़ निकालना होगा बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वी नीड टू फाइंड 64 होल स्क्वेयर। अब ये जो 64 नंबर है ना, हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ प्लस ए प्लस बी लिखना होगा। इन टर्म्स ऑफ लाइक 64 के इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर टू नंबर्स। तो फॉर सिंपल कैलकुलेशन 64 को हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 4। 64 in the sense 60 plus 4 is 60 plus 4 is nothing but 64. So I can write 64 as 60 plus 4 whole square. Like 64 means 60 plus 4. 64 whole square means 60 plus 4 whole square. So 64 means 60 plus 4 whole square. You can use like हम लोग 60 plus 4 की जगह दूसरे नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक मतलब कोई भी नंबर रख सकता है, जैसे कि 20 प्लस 44 जिसका सम 64 हो जाए। और एल्स वी कैन यूज़ लाइक 34 प्लस 30 इक्वल टू 64, एनी टू नंबर जिसका सम 64 हो, वी कैन यूज़ एंड सॉल्व द क्वेश्चन। बट आप इस 60 प्लस 4 यूज़ करो तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। तो और ये 60 लाइक 60 इंटू 60 विल बी 3600। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग 60 प्लस 4 यूज़ करते हैं। So it is in the form of this is A, this is B. We know that A plus B whole square equal to A square plus 2ab plus B square. In this question we will assume A as 60, B as 4. A 60, B as 4. So A equal to 60 plus 4 whole square equal to 60 whole square plus 2 into A. A is 60, B is 4 plus B square means 4 whole square. And 60 whole square means 60 whole square equal to 60 into 60. So 6 6 are 36, 0 0. So 3600 plus 2 into 60 into 4. 2 into 60 is 120. 120 into 4 is 480. It is like this. 2 into 60 into 4. 2 into 60 is 120. 120 into 4 is 120 into 4 is 480 plus 4 square is 16. So when you add all these, so I will add somewhere here 3600, 480 and 16. When you plus 6, 9, 10, it is 4096. 60 plus 4 is 64 whole square. So 64 whole square is 4096. So हम लोग इस क्वेश्चन को यूजिंग द हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज़ करके हम लोग 64 होल स्क्वायर का क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किए। तो वी कैन मतलब ए प्लस बी, सबसे पहले 64 को इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी लिखना होगा। सो यू कैन चूज एनी टू नंबर्स। सो मतलब कैलकुलेशन आसान के लिए 60 प्लस 4 यूज़ किए। आप दूसरे नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो जिसका सम 64, जैसे कि 20 प्लस 44, 34 प्लस 30. यू कैन यूज़ लाइक एनी नंबर्स जिसका लाइक 32 प्लस 32 इक्वल टू 64. यू कैन यूज एनी नंबर्स जिसका सम 64 हो एंड यू सब्स्टिट्यूट द एंड आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड वन इज 105 होल स्क्वायर मीन्स 105। तो 105 को
इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी लिखना होगा, एनी टू नंबर्स जिसका सम 105 हो. सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग 105 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 5. 100 प्लस 5 इज नथिंग बट 105. सो वी नो दैट a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. अभी इस क्वेश्चन में हम लोग a को एज्यूम करते हैं एज 100. सो a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 5. a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 5. सो a is 100, b इक्वल टू 5. 100 plus 5 whole square. a is 100 whole square plus 2 into 100 into 5 plus b square means 5 whole square. So 100 plus 5 is nothing but 105 whole square, which is the required one. So 100 square is it will be 10,000 plus 2 into 100 is 200. So 2 into 100 is 200 and into 5 it will be 1000. So plus 1000 plus 5 square is nothing but 25. 5 into 5 is 25. When you all add this, I will add like this: 10,000, 1000, 25. When I add this, I will get 11025. So 105 whole square is 11025 is your answer for 105 whole square. You can choose any two numbers whose sum is 105. You can choose any other, you can choose like you can write 105 as 90 plus 15 also, because 90 plus 15 is also 105. You can use any two numbers whose sum should be 105. any two numbers, कौन से भी दो नंबर ऐसे लो जिसका सम 105 हो. सो अभी इस केस में ये 90 होगा, b 15 होगा, एंड यू सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट द सेम आंसर. बट कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम लोग 100 प्लस 5 यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी ये हुआ सेकेंड पार्ट. अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट की. एंड थर्ड पार्ट इज 205 होल स्क्वायर को निकालना होगा. सो आई कैन राइट, क्या हम लोग 205 को 200 प्लस 5 लिख सकते हैं. 205 को 200 प्लस 5 लिख सकते हैं. सो इस केस में a इक्वल टू 200, b इक्वल टू 5. मतलब कोई भी ऐसा दो नंबर चूज करो जिसका सम हमको 205 मिले. तो कैलकुलेशन आसान के लिए हम लोग 200 और 5 यूज करते हैं, बिकॉज 200 प्लस 5 इज नथिंग बट 205. सो वी नो दैट a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. So a is nothing but 200 whole square. So I'll write here a is nothing but 200 plus b is 5 whole square plus 2 into a is 200, b is 5 plus b square means 5 whole square. So this is a square plus 2ab plus b square. So 200 whole square means it is like 200 whole square equal to 200 into 200. So 4 zeros. 2 into 2 is 4. So it is 40,000. 40,000 plus 2 into 200 is, so 2 into 200 is 400, and 400 into 5 is nothing but 2000. 2000 plus 5 square is 25. So you will get answer as you should add all these. So I will add here 40,000, 2000, 25 plus 5, 2, 0, 2, 4. So answer will be 42,025. 200 plus 5 is 205 whole square. So we got the answer. हमको मिला 205 whole square का 42,025. तो हमको ऐसा क्वेश्चंस में ना हम लोग ऐसे दो नंबर्स को चूज करना होगा जिसका सम हमको 205 मिले. सो 205 को यू कैन राइट एज लाइक 205 को यू कैन राइट एज 100 प्लस 105 ऑल्सो बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबल. बट अभी अगर ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा. बट वेयर एज 200 प्लस 5 इज
वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। तो हमको कोई ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे कोई 2 नंबर चूज़ करना होगा जिसका सम हमको 205 मिले। तो यही हमारा एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।